हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ योर होस्ट नीता बसीन एंड आज का प्रोग्राम है इमिग्रेशन ऑफिसर के साथ. जब आप लैंड करते हैं एयरपोर्ट पर, सो यू हैव टू मीट द इमिग्रेशन ऑफिसर. सो आई हैव माय गेस्ट टुडे इज द इमिग्रेशन ऑफिसर Kiran Sharma. Do watch this show till end, subscribe, comment and share this because this show is going to help a lot of people, not only here, all over the world. Kiran, welcome to my show. Thank you, very nice to meet you. Likewise, and she knows me for ages. She used to watch me on TV. When I was young, growing up. So, are you trying to say I'm old? No, you're Just not. kidding. You're the prettiest woman I always admired on TV. Thank you so much. So, Kiran, आप पहले यहाँ न्यूयॉर्क में JFK एयरपोर्ट पर थे. Yes. और यहाँ बहुत से इंडिया से सेलिब्रिटीज सिटिंग द गुरुद्वारा, ज्ञानी जी और नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट द एंटायर इंडिया Right. यहाँ पर आता है. Yes. आप हमें बताएंगे कि जब लोग आते हैं बहुत डरते हैं इमिग्रेशन ऑफिसर के सामने. Yes. तो जब आपके पास आते हैं तो आपके कौन से जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जो आप लोग पूछते हैं? It depends क्या आपका स्टेटस क्या है यूएस में. अगर आप यूएस सिटीजन हैं, ग्रीन कार्ड होल्डर हैं, विजिटर हैं, तो उस हिसाब से क्वेश्चनिंग डिफरेंट होती है. लाइक विजिटर्स के लिए हमें ये जानना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ देयर पर्पस ऑफ ट्रिप, वो यहाँ पे क्यों आ रहे हैं, कितनी देर रहेंगे और कैसे अपने आप को सपोर्ट करेंगे. So suppose a lot of tourists come from India, right? And when they come to you and they say that we are here for 1 month, and sometimes do you guys put the stamp for 4 months or 6 months? How does that work? Well, the standard is to give, जब भी B1 और B2 होता है, B1 वीज़ा के लिए होता है और B2 जो होता है विजिटर वीज़ा के लिए होता है. So B2 देते हैं तो स्टैंडर्ड मोस्टली 6 months होता है. और अगर कम देते हैं या ज़्यादा देते हैं, वो कोई स्पेशल सिचुएशन होती है इसीलिए देते हैं. So suppose I'm saying I want to stay here for 6 months, right? Sometimes when people say I want to stay here for 6 months, sometimes immigration officers, they ask more questions. Why do you want to stay for 6 months? Because there's some kind of We are saving the interest of U.S. citizens and the people who stay here permanently, legally, who have work permits to stay here. So हमें ये ज़रूरी होता है कि जो भी विजिट वीज़ा आ रहा है उनका पर्पस सिर्फ विजिट करना ही हो. अगर नॉर्मल लाइफ में देखा जाए तो अगर कोई विजिट करने आता है, आप भी कहीं घूमने जाते हो, तो यू जस्ट गो फॉर फ्यू डेज, राइट? 15 days, 20 days, maybe a month or 2 months. 6 months sounds little iffy, depends on person's age. अगर कोई लेट्स से कोई बुजुर्ग आता है या कुछ, हमें पता है कि वो अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने आएगा, तो that makes sense. And somebody like in their 20s, 30s, they're coming for 6 months, we have more questions for them. You have more questions for them. And suppose people are coming here and they come to you. Sometimes can you tell them, figure it out by looking at their facial expression कि ये लोग सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं आपके सामने? हमारी जो ट्रेनिंग होती है वो सच की, जो भी as soon you walk in front of us, आपके मुंह खोलने से पहले ही हमें पता होता है ऑलमोस्ट कि आप सच बोलने वाले हैं या झूठ बोलने वाले हैं. Really? Yes, we are trained that way. So is it a special? What was your education? How did you end up in this? My background is with the immigration lawyer. Okay. I worked with him as a legal person with him, Okay. assisting him, with a lot of stuff. His name is Munawar Sandhu. I Okay. worked in Jackson Heights with him for a little bit, and then I went into this job. Wow. So okay, suppose मैं आई आपके पास, okay, मैं पहली बार आई, ठीक है, और यहाँ अमेरिका में इमिग्रेशन वर्ड सुनते हैं लोगों को डर लगता है. They get prepared and the lawyer in India prepare you and coming here and I have an intention of staying here. I'm not going back. So I came to you and we're just doing a mock presentation. क्या होता है? तो मैं आपके पास आई. First thing आप क्या पूछेंगे? Mostly, most of the immigration officers would ask you,
आपका पर्पस क्या है यहाँ पे आने के, क्यों आ रहे हैं आप? तो मैं यहाँ पर आई हूँ, मेरी फैमिली यहाँ रहती है और उनके घर में शादी है, तो मैं शादी अटेंड करने के लिए आई हूँ। कि आपके पास इनविटेशन कार्ड है? नहीं, मेरे पास invitation card Can you get it for me? नहीं। Do I have to get it right now? Yes, for you? we can make a call and get it. If you're here for a wedding, you have to prove it to me that you're here for a wedding. Okay, I just called and then you might pick up the phone. But then we would wait until they pick up the phone. Until then, you will keep me here? Yes. I have to make sure. I have to make sure your intentions. कि आप क्यों आ रहे हैं? Okay, suppose, okay, finally after 2 घंटे के बाद I got a invitation card. और आप, तो क्या, I'm sorry, before that, can I make a phone call to them or you will calling Yes, them on their behalf? I would let you use either your cell phone. Okay. Obviously, you might be able to use your WhatsApp with the Wi-Fi here, or we will allow you to use our landline. Okay. Suppose after 2 hours sitting there waiting, I got the invitation card. What is your next question? How are you supporting yourself? So I have to support when I come here. Isn't my family जो जिन्होंने मुझे बुलाया वो If support they are supporting you, then you have to show me paperwork. Like it's support form is I-134. If you have the support form from the family, then that would be sufficient. Okay. Suppose नहीं है और मैंने किसी का कार्ड यूज करके शादी का अमेरिका आ गई और उनका कार्ड दिखा दिया, उनसे मेरे को सपोर्ट फॉर्म नहीं मिला और मैं कह रही हूँ कि नहीं मेरे पास I-135 नहीं है, तो what are the next Yeah, but the steps? thing is that I can only answer the questions like based on facts. Supposedly, it's on the other side. So you will know right away that this yes. person if is that making up the person- story. Oh yes, if the person keep talking and as soon they open their mouth, I can tell you if lying or not lying. Wow, and you're trained for Yes. that. So कोई ऐसा मोमेंट है जब लोग आपके पास आते हैं, आप कहते हैं कि खड़े हो जाओ, फोटो खींचनी है आपकी आईडी कार्ड के लिए और हम लोग थोड़े बाल ऐसे ऐसे करते हैं, खड़े होते हैं, ऐसे लगता है जैसे कि हम कोई पोस्ट बना रहे हैं। My best incident was with Babaji's the Ragis. They came through and मैंने उनको बोला कि आप सीधे खड़े हो जाओ, ताकि फोटो खींचनी है। So then he's like, 1 minute madam, I'm like, what happened? And वो सीधा देख के कैमरे में and he's going like this. And then अपनी दाढ़ी फिक्स कर रहे हैं। मैंने कहा मैंने वॉलेट पे नहीं डाली। It's just a process, simple picture. You don't even have to smile, just a picture and that's it. Any worst moment where you had to face big challenge having somebody, it doesn't matter India or non-India, anywhere, your experience? I've been doing this for 22 years and there's so many incidents and I met so many people, so many good people and bad people. My pleasure was meeting Dr. Kalam here at the JFK airport. God. Yes, I met him and it was my pleasure. I met him in India when he was president in the president house. Oh, okay, It's yeah. a blessing. I met he was such a wonderful guy. Then I met the Khans and all that. Right. So when people know that अपना ही बंदी है कि Indian है, Oh, especially the ladies and like ਜਿਹੜੇ older log, right? They may be wheelchairs from there. They don't know the language, right? And I completely understand. I relate, because I have elders, at my house, and they would go and actually, we treat people the way we want to be treated. So we treat them really well. And जब भी मैं अपना मुंह खोलती हूँ पंजाबी में या हिंदी में, they are so excited. They almost want to hug me. Yeah. Like, oh, shukara, तुसी पंजाबी बोलते या तुसी हिंदी बोलते. So it's my pleasure. So in immigration, you're saying you're here from 22 years. So when people are coming from abroad, what advice you will give them? Always आपको हमेशा सच बोलना चाहिए क्योंकि अगर आप सच नहीं बोलते हो, हमारे बड़ों ने भी कहा एक झूठ बोलोगे तो बोलते ही जाओगे आप, तो सच ही बोलना चाहिए. This is land of many opportunities. अगर आप सच से शुरुआत करोगे, so it's better for you, and that's about it. And then everyone has rights. Even if you come to the airport as a visitor, as a green card holder, as a U.S. citizen, we all have rights. Well, those are basic human rights. So
I don't feel that कि आपको डरना नहीं चाहिए. आप इंडिया के हिसाब से सोचते हो कि कोई भी ऑफिसर यूनिफॉर्म में है या कुछ भी they will abuse you or कुछ भी ऐसा कुछ नहीं होता है यहाँ पे. So respect the officer and the officer will surely be professional and respect you. Thank you so much Kiran and thank you. I hope कि ये जो प्रोग्राम आपने देखा है इससे आपने बहुत कुछ सीखा होगा, क्योंकि मैंने बहुत कुछ सीखा आज किरण से इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के बारे में. क्योंकि ये एक डिपार्टमेंट है जो कि लोगों को कई बार जब हम लोग आते हैं वहाँ से इंडिया से तो या किसी भी मुल्क से आते हैं हमें हुआ लगता है कि ओह माय गॉड वहाँ पर क्या होगा. लेकिन जब आप सच बोलेंगे तो डरने की बात नहीं है, क्योंकि ये लोग बहुत अच्छी तरह से ट्रेन होते हैं. ये बता सकते हैं आपके मुंह खोलने से पहले कि आप सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं. तो सच का साथ दें. अगर आए हैं तो सच बोलें. तो जो होगा सो होगा. घूमने के लिए आप 5 महीने भी आ सकते हो अगर आप अपना अफोर्ड कर सकते हो. then you are given 6 months. Enjoy that and leave, and it's just don't do anything illegal. Abide the law. So suppose कई लोग आते हैं, okay, वो 6 महीने बाद चले जाते हैं. फिर 3-4 महीने बाद फिर आते हैं. 10 साल का वीजा लगा हुआ है, राइट? जब लोग बार बार फ्रीक्वेंटली आते जाते हैं तो आप लोगों का रिएक्शन क्या होता है उनके पासपोर्ट को देख? Then again, it depends case by case, right? We have to again case by case हमें जानना, उसको स्टोरी जानना होता है कि क्यों आ रहे हैं, what's the reason, and believe me उसका सब record होता है हमारे पास. So अगर आप abuse कर रहे हैं, and I would suggest don't abuse it. Thank you so much, Kiran. Thank I you. really Nice appreciate meeting it. you. Pleasure meeting you as well. Thank you. So here is an immigration officer who is in Indiana now, but she was in JFK Airport. Then she went to Toronto. Now it's in Indiana, and she is immigration officer, our own Kiran Sharma, and she has given wonderful tips, very informative tips she has given. Please do watch, share, and comments. Thank you so much. Thank you. I hope you like the show. Please do share, comment, and subscribe to these 2 channels. This is in New York Facebook page, and Neeta Hussain Show will be bringing you more informative programs. Until then, take care of yourself.